I welcome you all to the next session of your marketing FIBCom. In previous sessions, we started with the chapter number 3, that is product mix and price mix. In that, first we saw what is product mix. Before understanding what is product mix, the chapter says us to understand the meaning, characteristics and definition of product. Then we'll move further to the product mix. Basically, product is nothing but a service or a product or a goods offered to the consumer in the market to consume, and which has the ability to satisfy the want of the consumer in the market is called as goods. Basically, is called as product. Basically, products can be tangible or intangible too. Tangible product includes physical products like toothpaste, Colgate, which we can see, which we can feel, which we can touch. But whereas intangible product includes services which we go, enjoy, we see, we consume, etc. In today's scenario, product plays an important role in achieving the markets for profitability in short run as well as in long run. In today's market world, product is not only tangible or not only intangible, but it is a combination of both tangible and intangible. For example, when we go to a restaurant to have good food, eating food is a physical, that is tangible product, whereas enjoying the food in the atmosphere of luxury is intangible. Therefore, many of the authors and many of the famous thinkers have said that product is a combination of three things. Product is what is just not only a physical part, it is all what it includes into it, whether physical or intangible. Basically, product are of three types. Product include three parts. One is tangible, that is physical appearance. Then other one is intangible, that is inheritance जो है वो, then intangibility means service associated to it. Yesterday we studied about we started about the characteristics of product. In that, products are basically characteristics into two broad category, that is explicit product category and implicit product category. We studied in the last session with respect to explicit product category. Explicit product category is basically a category or a characteristics where the producer and the consumer both settled with a common argument. In that, there was first one was physical configuration, then we have was associated services, then package and brand name, then product mix, product life cycle. This was explicit characteristics. Today we will be dealing with implicit characteristics of a product in product mix. Clear to all? Before understanding all about what is product mix, we need to understand, we need to have a proper understanding about the product, what are the characteristics of product, and then only we can move further with respect to the product mix component. Clear to it? Okay, let's start with today's session. Implicit product characteristics. As discussed earlier, explicit characteristics are those on which there is a near argument among all about the existence and nature, whereas there is a disagreement among the consumer about the existence and nature of certain characteristics in the product. This disagreement from the intrinsic characteristics of the product. इसका मतलब क्या है? देखो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट के, जो प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर दोनों एग्री करते हैं, ये दिस इज द डिसएग्रीमेंट विच कॉमनली एग्रीज. बट ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोडक्ट के जो कंज्यूमर एग्री करता है बट प्रोड्यूसर एग्री नहीं करता है, वेयर प्रोड्यूसर एग्री करता है तो कंज्यूमर एग्री नहीं कर सकता है. ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे फीचर्स जो प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर दोनों में से कोई एक does not have a common opinion, for that argument is known as implicit
characteristics. Clear? Okay. Then we have these disagreements exist because each individual see the product in the somewhat different and therefore unique way. क्यों होता है? क्योंकि एवरी कंज्यूमर जो होता है उसको प्रोडक्ट देखने की नज़रिया डिफरेंट होती है, उसकी प्रोडक्ट देखने की नज़रिया डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई शैम्पू ले रहे हैं, सपोज मेरे लिए वो डैंड्रफ के लिए मुझे चाहिए, तो कोई उसे स्मूथनिंग के लिए मांग सकता है, कोई उसे कलरिंग के लिए मांग सकता है. डिफरेंट प्रोडक्ट, different views. Therefore, the conclusion and the argument drawn by the different consumers are different too. Clear to it? Okay. Now, यही आर्ग्यूमेंट है, इसीलिए इसको इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया है. what is the perception of one person is not the same as that of another person. जैसे एक इंसान, अगर सपोज मैं लॉरियल का शैम्पू यूज़ करती हूँ एंड यू ऑल्सो यूज़ द लॉरियल शैम्पू, ठीक है, वाइट वाला, बट शायद मैं जितना सेटिस्फाइड हूँ उसको यूज़ करके शायद आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, या फिर आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिफरेंट होगा. क्यों? क्योंकि हर इंसान की प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद उसको देखने का नज़रिया, उसको देखने का परसेप्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट it will be from the other person. Therefore, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो डिफरेंस परसेप्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट आर कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स. बट ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे फिजिकल अपीयरेंस हुआ, टेस्ट हुआ, फ्रेगरेंस हुआ, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका कंक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोड्यूसर एज विद रिस्पेक्ट टू द कंज्यूमर इज ड्रॉन on a common aspect, that is called as explicit characteristics. Clear to it? Okay. These different perceptions and arguments point can be called as the intrinsic characteristics of a product. There are four such फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे फोर फीचर्स है जो इंट्रिसिड बोल सकते हैं. फर्स्ट वाला है प्रोडक्ट सिंबलाइजेशन. अ प्रोडक्ट इज अ क्लस्टर ऑफ सिंबल्स बाय वर्च्यूज ऑफ इट्स कलर, शेप, साइज एंड फंक्शन. इट इज अ सिंबल. देखो, जब हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो प्रोडक्ट का शेप, साइज, कलर, टेस्ट, जो फीचर्स है वो मल्टीपल कलर्स से, मल्टीपल फीचर्स से, मल्टीपल सिंबल्स से बना है. देखो, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लेस का पैकेट भी लेते हैं तो उसके ऊपर जो डिज़ाइंस बनी है, उसके ऊपर जो लोगोज बने हैं, उसका कलरिंग जो यूज़ किया है, या कुरकुरे के पैकेट्स पर आप देख सकते हो, देर आर मैनी डिफरेंट कलर्स, मैनी डिफरेंट logos which forms a product. Then a different size of the product gives it a different meaning to different people. और different size अगर प्रोडक्ट का है तो different meaning देता है different प्रोडक्टों को, different इंसान को कंज्यूम करते वक्त. कोई बोलेगा ये बहुत ही छोटा है इन 10 रुपीज़ के साइज से, कोई बोलेगा ये बहुत ही ज़्यादा है 10 रुपीज़ के साइज से. डिपेंडिंग अपॉन द कंज्यूमर यूज, डिपेंडिंग अपॉन द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, the conclusions can be drawn. Similarly, different color or different function as on. For example, a gentleman wearing a white or a grey shirt gets coated into a traditional men's image as compared to a gentleman wearing a red and crushed colored shirt. Thus, a product is the same total of the meaning its communicate, refers, other look at it और यूज इट. क्या होता है? देखो, हम कभी कोई प्रोडक्ट पहनते हैं या कोई प्रोडक्ट, हम जब भी फॉर एग्जांपल शादियों में जाते हैं तो कभी हम लोग लाइट कलर कपड़े पहनकर जाते हैं, तो कभी हम डार्क कलर्स कपड़े पहन के जाते हैं. पर डिफरेंट लोगों को वो लाइट कलर के कपड़े डिफरेंट मैसेज देते हैं, डार्क कलर के कपड़े डिफरेंट मैसेज देते हैं. वाई दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर, परसेप्शन ऑफ द पीपल हु आर लुकिंग एट यू. And different people, different perceptions communicate. It may communicate a symbol of status, style, economy, performance, achievement, boldness and so on. अभी देखो, अगर मैं कोई शादी में गई, बर्थडे पार्टी में गई, बट आई वेयर अ लैविश ड्रेस विथ लैविश ऑर्नामेंट्स, कोई बोलेगा कि क्या है ये, बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनकर आई है. कोई बोलेगा कि वाओ सो ब्यूटीफुल. द अदर माइट से सी हर स्टेटस. डिफरेंट लोगों का देखने का तरीका डिफरेंट होता है. सिमिलरली व्हेन वी कंज्यूम सर्टेन प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद भी हमारे जो परसेप्शंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रोडक्ट इज डिफरेंट. क्लियर टू इट? ओके, फर्स्ट वन वाज प्रोडक्ट सिंबलाइजेशन. ओके, next one is communication media.
A product is a bundle of symbols and it is a bundle of communication also. देखो एक प्रोडक्ट जो है वो बंडल ऑफ सिंबल से बना है, बंडल ऑफ कलर से बना है, तो वो डिफरेंट कलर डिफरेंट सिंबल में कम्युनिकेट डिफरेंट थिंग टू द डिफरेंट पीपल्स. ठीक है. ऑफ कोर्स व्हाट दिस कम्युनिकेट is it determined by the consumer personal interpretation of symbols. मैंने वही बताया कि इसमें से क्या इंटरप्रिटेट होता है, जो डिफरेंट कलर्स डिफरेंट सिंबल्स है वो डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट इंटरप्रिटेशन मिलता है एंड दे ड्रॉ द कंक्लूजन इन अ डिफरेंट वे. ठीक है. रिलेटेड बाय द क्लस्टर ग्रुप एक्सेट्रा. Determined by the consumer personal interpretation of the mm, symbol mediated by his group influence and personality. Every product says something about itself. Every product is a storyteller about what it is, what it is used for, and what trade, by whom, where it is available as on. With every product देर इज इंफॉर्मेशन गिवन और हिडन. देखो क्या होता है कि प्रोडक्ट आज जब हम बोल रहे हैं कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ इट इज़ अ बंडल ऑफ सिम्बल्स एंड कलर्स, तो ये जो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देता है क्योंकि वो डिफरेंट कम्युनिकेट हो जाता है. हमारे हमारे कल्चर के हिसाब से हम उसको कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट ले लेंगे, दूसरे कंज्यूमर दूसरे हिसाब से लेंगे, तीसरे कंज्यूमर तीसरे हिसाब से लेंगे. बट एक प्रोडक्ट जो है ना वो एक स्टोरी टेलर होता है. वो अपने बारे में सब कुछ बताता है, वेदर कैसे यूज़ करना है, कौन यूज़ करेगा, कितने में है, कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा. कुछ प्रोडक्ट ओपनली बताते हैं, कुछ प्रोडक्ट में वो हिडन रहता है विथ अ पैम्पलेट और अ लीफलेट इनसाइड द प्रोडक्ट. क्लियर. स्पेशली जब हम लोग एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हैं तो उसमें हमें मैनुअल दिया जाता है. हम जब एक ऑटोमोबाइल्स लेते हैं तो हमें ट्रेनर्स दिए जाते हैं जो हमें उसके बारे में बताते हैं. बट जब एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है तो हमें उसके बारे में कोई बताता नहीं है, बट हमें उसके साथ एक मैनुअल मिलता है जो हमें उसके बारे में बताता है. इसलिए बोला गया है कि एक प्रोडक्ट जो है वो स्टोरी टेलर है. बट जब वो स्टोरी बताता है अपने बारे में कि वो कहाँ से है, कैसा है, कौन यूज़ करेगा, कितने में है, कहाँ पर मिलेगा, कौन से कलर्स का है, क्या प्राइस है, तब डिफरेंट लोगों को वो डिफरेंट कम्युनिकेट हो जाता है एंड दे इंटरप्रिटेट द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. क्लियर. नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट परसेप्शन. प्रोडक्ट्स आर प्रिजर्व्ड or viewed in different ways by different consumers. Perception is a psychological process. Perception being with a clue of the environment that is received by a consumer. This do send a message for the brain. The brain compresses this message with your stored message in the brain and perception occurs. For example, when a cup of tea is placed in front of the consumer smells the tea. The tea is the clue for the environment which is received by the consumer. The brain records the smell and compares it with other stored smell, and the consumer comes to the conclusion that the smell is of Tata tea or Lipton or Brook Bond, etc. In this way, instead of the smell, the clue from the environment can come from the taste, color, texture, etc. The perception of the consumer will help the producer to develop the relevant product. Relevant product is the product that is preserved by the consumer as the smell intend him to preserve it, because it is relevant to the realized or aspirate behavior pattern of those people who complete the market comprise the market of the product. अब कंज्यूमर परसेप्शन क्या होता है. देखो कंज्यूमर का परसेप्शन कैसे होता है कि what they feel they do. जैसे कि अगर हमारे घर में हमने चाय बनाई और उसका फ्रेगरेंस टी का आ रहा है तो हम तुरंत बताते हैं
कि वो टाटा टी का फ्रेगरेंस है, ब्रूक बॉन्ड का है, रेड लेबल का है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को हमने ऑर्डर दिया है कि यस दिस इज ऑफ दिस टी। इसीलिए प्रोड्यूसर्स को ये एक हिंट मिल जाती है टू चेंज द फ्लेवर, टू चेंज द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, सो दैट दे प्रिफर द थिंग्स। और ये डिफरेंट इन ऑर्डर, डिफरेंट इन टेस्ट, डिफरेंट इन इसीलिए डिफरेंट इन कंजम्पशन होता है। किसी को टाटा टी पसंद है, किसी को ब्रूक बॉन्ड पसंद है, किसी को कोई और टी पसंद है, तो किसी को कोई और टी। एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट परसेप्शन। तो इसीलिए लोगों का परसेप्शन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। Truly speaking, it is almost impossible to separate the perception of the product from its evolution. Both, both conceptually and operationally, though theoretically separable, they occur simultaneously. Along with perception, evaluation implies the setting up of set of criteria to determine expected satisfaction. It is comparing the efforts involved and rewards received by the consumer. The efforts may be necessary search for the product, the price at its affect the consumer's pocket. The evaluation may be of reward, functional, psychological, that he get in return. Here, evaluation differs from individual to individual and from time to time in case of some individuals. Thus, every product has both implicit and explicit characteristics and both these together make up the product. अगर हम बोलते हैं कि नहीं एक प्रोडक्ट में सिर्फ इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक्सप्लिसिट नहीं होता है, या फिर हम बोलते हैं कि नहीं एक प्रोडक्ट में सिर्फ एक्सप्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इम्प्लिसिट नहीं होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज एक्सप्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स से ही एक प्रोडक्ट की बुनियाद बनी जाती है। And thereafter only the product is available in the market with the help of market research, market development and market analysis, with the help of distribution channel, with the help of warehousing and with the help of transportation at a large. Clear to it? Okay, thank you all. Thank you. We'll meet you in the next session with the next topic of marketing. Thank you.